Hello, you're watching Hornbill TV's Northeast Express. A day after the demise of popular singer Zubin Garg, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma on Saturday said that the post-mortem examination of Garg's body was completed in Singapore and the mortal remains were handed over to those who accompanied him there. The mortal remains of the Assamese cultural icon will be kept at a multi-sport stadium in Guwahati for fans to pay tributes, and this decision was taken at a high-level meeting chaired by the CM late Friday night. The Chief Minister personally reviewed the arrangements at Sarusajai Stadium, giving the highest priority to make sure each and every well-wisher of Zubin can pay their respects in a smooth and hassle-free manner. The Assam government also postponed the half-yearly examination scheduled on Saturday in schools, while the Chambers of Commerce decided to keep all business establishments across the state closed on September 20th and 21 in respect of the departed singer. A rare scene of grief unfolded in Guwahati on Saturday as businessmen voluntarily closed their shops to mourn the sudden death of Assam's beloved singer and cultural icon, Zubin Garg. Public transport came to a standstill, with buses and autos scarcely seen on the streets as the city expressed sorrow in unison. Without any government directive, fans across Assam, the northeast and beyond joined in the tribute. Candlelight vigils and prayers were organized, and thousands were expected to honor the legendary artist whose music had left an enduring mark on generations. बंद किए हैं कि जुबिन दा के लिए हम लोग जो है ना चिंता व्यक्त करते हैं, बहुत दुख लग रहा है, इसीलिए हम लोग खुद दुकान बंद किए हैं। कोई दिक्कत नहीं, मगर उनके लिए हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है और इसी सब के लिए हम लोग दुकान बंद करके बैठे हुए हैं। सरकार की नहीं, सरकार की तरफ कोई दिक्कत नहीं है। सरकार के क्यों, हम लोग खुद आम पब्लिक सब आदमी के सहमत से चल रहे हैं और उन्हीं के सुविधा है। ये तो बहुत बड़ा गायकार था ना, एकदम बहुत था। कहीं भी कोई प्रोग्राम होने के बाद उनका प्रोग्राम के लिए आदमी जाना ही पड़ता था। तो आप लोग भी बहुत खूब देखते थे, खूब दिल मन में लगता था। जब ये नाम सुनने से जुबिन आएगा तो हम लोग को खुशी होता था कि कब जाए देखे, कहीं भी कोई प्रोग्राम में उनका प्रोग्राम में जाने, थोड़ा देर के लिए भी देख के जरूर आएगा। और वैसे भी आते थे बाज़ार में, हम लोग उससे बहुत बातचीत करते थे। आते थे बाज़ार में, ये जो है अपना ये जो बाज़ार में आते थे, हम लोग से मिलते जुलते थे। बहुत गुड आदमी थे, कुछ नहीं, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। हम लोग इसलिए बंद रखा है, जो जुबिन गार्ग आज पूरा असम का एक संपद है, सबका संपद है। ये किसी को नहीं मानना चाहिए जो हमारा नहीं है, पूरा असम का नहीं, वो इंडिया का है। अभी बाहर में भी उसको बहुत कदर करता है आदमी, तो इसीलिए हम लोग असमवासी है, हम लोग असम को मर्यादा देता है। इसीलिए हम लोग दुकान, सब व्यवसायी सब दुकान बंद करके, गाड़ी मोटर बंद करके, हम लोग जुबिन गार्ग आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करता है। शाम को हम लोग उसको कैंडल मार्च करेगा और जो जो करना है उसीलिए हम लोग उसको, जो आज उसको युवा समाज है, गाभरू लड़की लोग है, सबका वो प्रिय एक जन गायक अभिनेता। खास करके आप लोग जुबिन का डेथ हुआ है उसका कॉन्डोलेंस करते हुए आप लोग दुकान बंद रखा है। हाँ, इसीलिए हम लोग दुकान बंद रखा है। पूरा अच्छे से बोलिए। जुबिन गार्ग का जो आज जो दुर्घटना जो घटित वो सिंगापुर में जो हुआ है, ये हम लोग को बहुत बड़ा दुख लगा है। जो ऐसे एक दुर्घटना के लिए हम लोग सब मरम्मत, इसीलिए हम लोग बंद रखा। तो आज हम लोग का जो जुबिन है, आसाम का वो गोल्ड था। जो आसाम का जो संस्कृति कल्चर जो है वो हम लोग का गोल्ड है एक प्रकार का, वो हमारे आज हम लोग के पास नहीं है। तो हम लोग इसके लिए बहुत दुखित हैं। और हम लोग तो व्यवसायी आदमी है, तो हम लोग को ऐसा फीलिंग होता है जैसे कि हमारा घर में कोई देहांत हुआ है। तो
आसाम का जो गौरव है, हम लोग का जो जुबिंदा है, हम लोग पहले शुरू से स्टार्टिंग से उनको देखा है, उनका प्रोग्राम देखा है, तो हम लोग का मन नहीं मानता है, तो हम लोग खुद ही बन किया जी हमारा फैमिली मेम्बर है और हमारा आसाम का है, तो हम लोग खुद ही दुखित है, क्या पता। Thousands of people flocked to Zubin Garg's residence at Kahilipara, Guwahati to pay their last respects. Many waited through the night for a glimpse of the idol, while some broke down recalling personal memories connected to his songs. Fans describe Zubin Garg as a family member through his music, with his passing leaving a huge void in Assamese culture. Tributes continued to pour in from across India, reflecting the singer's lasting legacy and the profound impact he had on the people of Assam and the Northeast. A day after 2 Assam Rifles personnel had been killed in an ambush at Nambol Sabal, Laikai in Bishnupur district, residents of the area had staged protests on Saturday morning to condemn the brutal attack. Locals dressed in traditional mourning attire had gathered near the ambush site, raising slogans and holding placards denouncing the violence for creating fear and panic among the public. Later, women had led a protest rally voicing outrage over the firing in a crowded area and demanding an end to such assaults on security forces. The ambush on Friday evening had claimed the lives of Naib Subedar Shyam Gurung and rifleman Ranjit Singh Kashyap, while 5 others had sustained injuries. The injured personnel had been evacuated to RIMS Hospital, where they had been reported stable. In a defense statement, officials had confirmed that the Assam Rifles column had been ambushed by unidentified armed men in a denotified area of Manipur's Imphal Valley, where the Armed Forces Special Powers Act had not been in force. The statement had said that in the ensuing action, 2 personnel of Assam Rifles had been martyred and 5 had been injured, and search operations had been ongoing to apprehend the attackers. One of the injured, N. Nongthon, had recalled that around 4 to 5 assailants had suddenly opened fire at them, yet said they had not retaliated immediately, as doing so would have endangered civilians nearby. Protests had drawn strong condemnation not only from locals but also from organizations across Manipur. The Churachandpur-based Kukizo Council had denounced the ambush, stressing that targeting paramilitary forces in public areas had been unacceptable. One protester, S. Bungo, had questioned the motives of the attackers. He had asked what the armed men had hoped to achieve through such a barbaric and unprovoked assault, and had warned that the restraint shown by the personnel should not have been mistaken for weakness. Governor Ajay Kumar Bhalla had expressed grief over the deaths, offering condolences to the bereaved families and praying for the swift recovery of the injured. A Raj Bhavan statement had said that the governor had acknowledged the courage and dedication of the martyred soldiers in protecting the nation. By Saturday evening, an uneasy calm had prevailed in Imphal and Bishnupur as search operations continued and the attackers had remained unidentified. The Assam Rifles on Friday paid tribute to its 2 Jawans who lost their lives in the Bishnupur terrorist attack. The Assam Rifles tweeted, Lieutenant General Vikas Lakhera, AVSM, SM Director General Assam Rifles and all ranks of Assam Rifles pay solemn tribute to Naib Subedar Shyam Gurung and Rifleman Ranjit Singh Kashyap, who made the supreme sacrifice in the line of duty in Manipur today and offered deep condolences to the families of our brave soldiers. Meanwhile, former Manipur Chief Minister Biren Singh expressed grief over the killing, calling the attack a cruel blow to the country. He conveyed condolences to the families of the deceased and demanded the harshest punishment for the perpetrators. Last night, Biren Singh visited RIMS Imphal, where the 5 Assam Rifles personnel are currently undergoing medical treatment. Imphal ADGP Ashutosh Kumar Sinha said an ambush has taken place on security forces despite all security forces trying to bring peace and restoration of normalcy.
According to security officials, 2 Assam Rifles personnel, including a junior commissioned officer, were killed and 5 others injured in the attack. A press note stated that in a brazen act of terrorism in an AFSPA denotified area of Manipur, unidentified terrorists ambushed a vehicle base column of the 33 Assam Rifles unit around 5:50 p.m. on September 19th. The column was moving on National Highway 2 through a heavy built-up area in Nambol Sabal Lekai during hours of darkness when it came under unprovoked automatic weapon fire. 2 personnel lost their lives while 5 others sustained injuries. That is, this ambush has taken place on security force. Despite all security forces are in process of bringing peace and restoration of normalcy. A divisional committee office of the Communist Party of India Marxist in Tripura had been partially demolished under mysterious circumstances late Friday night. Unidentified miscreants had reportedly used bulldozers to damage parts of the office, including doors and furniture, though the main structure had remained intact. The incident had triggered sharp political reactions. On Sunday, CPI Politburo member and leader of opposition Jitendra Chaudhary had visited the site and had held the ruling BJP responsible. He had alleged that the demolition had been carried out under the patronage of those in power, saying that if the act had been legal, it would not have been done secretly at night. Chaudhary accused the BJP of failing to fulfill promises since 2018 and of exploiting people, claiming that such actions had reflected desperation. The CPIM had vowed to intensify its struggle against what it had described as injustice and intimidation. প্রতাপগড় পার্টির অঞ্চল কমিটির অফিস গতকাল মধ্যরাতে ভারতীয় জনতা পার্টি আশ্রিত সমাজ বিরোধীরা বুলডোজার দিয়ে নিয়ে এসে যে আপনারা দেখছেন এটাকে গড়িয়ে দেয়। এ রাজ্যে আরএসএস বিজেপির বর্বরতা যে কোন জায়গায় পৌঁছেছে, জনগণের কাছে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকারে এসে গত 7.5 বছরে এই ত্রিপুরা যেহেতু লোড করেছে, এ রাজ্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, আইনের শাসন সম্পূর্ণ বুলণ্ঠিত। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আজকে যাচ্ছে তাদের এই অপকর্মের বিরুদ্ধে। কাজেই এদের যে এই ধ্বংসের শেষ লগ্নে এসে এরা জ্বলে ওঠার চেষ্টা করছে এইভাবেই। কিন্তু কাপুরুষরা, যারা বীর বা নৈতিকভাবে যারা কাজ করে, তারা দিনের বেলা জনসমক্ষে এসে
যদি এরকম কোনো দল বা কোনো ব্যক্তি বা কোনো গোষ্ঠী যদি অন্যায় করে থাকে তার বিরুদ্ধে তারা বলবে, ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কিন্তু তারা যে অন্যায় কাজে লিপ্ত, কাপুরুষ, দিনের বেলা আসতে সাহস পায়নি, মধ্যরাতে এসে এই বর্বরতা কাজ করল। এ রাজ্য এরা বলে সুশাসন, উন্নয়নের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছে। এই উন্নয়ন হলো এই আইনের শাসন, গণতন্ত্রের এটা ধ্বংসাবশেষ আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে তার চিহ্ন রেখে গেছে। এর বিরুদ্ধে জোরদার প্রতিবাদ হবে এবং এই রাজ্য থেকে এই বর্বরদের উৎখাত যতদিন না হয় আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন জারি থাকবে। এইভাবে রাতের অন্ধকারে কাপুরুষের মতো আক্রমণ করে আমাদেরকে দমানো যাবে না। তারা করছে কি নাম আমরা এক্ষুনি বলছি না, আমরা আইনের যারা রক্ষক তাদের কাছে বলবো, কেননা এই যে বোলডোজার এগুলোর সব ছবি টবি সমস্ত এসছে, কাজেই পুলিশ একটু চেষ্টা করলে এগুলি পাবে, এক্ষুনি প্রকাশ আমরা বলছি। Two inmates of Jaipur Central Jail reportedly escaped on Saturday morning. According to reports, the two prisoners identified as Naval Kishore Mahawar and Inas Kumar managed to flee by climbing a 27-foot wall using a pipe installed inside the jail premises. The escape occurred around 3:30 a.m. Both escapees have been serving sentences for theft-related offences. ADG Jail Rupendra Singh said the two have been in jail for only 4 to 5 days. The police are now working with the jail administration to investigate the matter. The ADG also added that preliminary findings suggest the prisoners removed the bars from the bathroom window of the barracks, climbed down the main wall using a pipe, and then jumped outside of the jail. Civil society groups representing the Tripura tribal community have announced a 12-hour statewide strike on October 13, pressing for a 7-point charter of demands. The announcement was made by rebel-turned-MLA Ranjit Debbama at a press conference where he was joined by leaders of several organizations. Debbama clarified that the protest is entirely apolitical. This movement has no link with any political party. It is a civil society initiative to press demands that the government must address. The first two demands focus on detection and deportation of illegal immigrants and setting up detention camps to hold them. Debbama alleged that while the Ministry of Home Affairs directed all states to act, Tripura has failed to comply, unlike Assam, which has carried out operations. The group also called for the introduction of inner line permit in 6 scheduled areas to curb infiltration and inclusion of army and paramilitary officers in the special task force. Speedy implementation of the Tripura Accord signed 18 months ago, official recognition of the Roman script for Kokborok, and cancellation of fake ST certificates complete the lists of demands. Emergency services and essential shops will remain outside the purview of the strike. The government आपका डिमांड सुन नहीं रहा है. Why? This is a long pending demand जो आपने किया है. सारे डिमांड्स लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है त्रिपुरा में. देखो आज मैं पॉलिटिक्स पार्टी से हम नहीं आए, हम सिविल सोसाइटी से हम प्रेसिडेंट में आए. इसीलिए ये हम बोलना चाहते हो कि गवर्नमेंट नहीं सुनेगा तो हम तो मूवमेंट कर रहे हैं, पब्लिक को लेके तो हम मूवमेंट कर रहे हैं. पार्टी तरफ से पार्टी में जो त्रिपुरा में था वो तो मूवमेंट कर रहा है, वो भी करेंगे. देखो हम सब त्रिपुरा का ढांचा करने के लिए दिल्ली में 9 तारीख जंतर मंतर में हम किसी पार्टी का फ्लैग नहीं लिया, अभी सब लोग आया, नॉर्थ ईस्ट का बहुत लोग भी हमें ज्वाइन किया. इसीलिए हम भी चाहना ढांचा बनाने के लिए त्रिपुरा लोग को ढांचा करने के लिए हम भी एक साथ किसी को पार्टी का फ्लैग लेके नेशनल फ्लैग लेके हमने मूवमेंट करना चाहिए. सर आप कर रहे हैं. हम 13 अक्टूबर हम सिविल सोसाइटी तरफ से हमने 12 घंटा बंद कॉल किया. क्यों किया? हमारा छात्रों का दादी हमें हम लिख के दिया है, ये है हमारा, ये क्यों हमने बंद कॉल किया. देखो सिविल सोसाइटी में बहुत NGO है, बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, क्लास है, हम सब मिलते हैं. हमारा जो पार्टी त्रिपुरा में था, कांग्रेस हो, बीजेपी हो और IPF हो, उनका बाहर भी
बहुत त्रिपुरा लोग हैं, हम उनको संगठित करके हमारा त्रिपुरा का जितना जो अधिकार है उनको लेके हम लोग मूवमेंट करना चाहते हैं। तो हमने बहुत बड़ी मांगा है, हमने अगरतला में रैली किया है, हमने और किया है, लेकिन गवर्नमेंट हमारा बात नहीं सुन रहा है। इसीलिए हमने डिसीजन लिया है, हम 12 घंटा बंद करके देखेंगे अगला दिन में क्या होगा। हम फर्स्ट 12 घंटा बंद शुरू किया तो ये मूवमेंट तेजी होगा यदि गवर्नमेंट नहीं मानेगा। तो बेसिक जो मेन इलीगल माइग्रेंट जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर से जो डायरेक्शन किया ना, वो त्रिपुरा में इम्प्लीमेंट करने के लिए टू त्रिपुरा से एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 इनलैंड परमिट के लिए हमने ये मांगा है इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये मेजर हमारा डिमांड है, इसीलिए हम मांगा है। और सब ह्यूमन स्क्रिप्ट वो त्रिपुरा में चालू करना है, त्रिपुरा में लैंग्वेज देखने के लिए, वैसे हमारा मेजर। And that was all for this as bulletin. For more news and updates, stay tuned to HornbillTV. Goodbye.